Hello guys, welcome to MBA Pathshala. So guys, today's session is on Para-Jumbles and in 10 minutes we'll learn all the concepts of Para-Jumbles and we will also solve some questions and I'm going to give you one question for homework as well. Okay, let's start. Para-Jumble. So देखो पहला rule, take the very first rule is that the movement is always from general to specific. Now when I say general, look at a statement like this. Science is important for the entire mankind. सुनने में लग रहा है ना बहुत जनरल बहुत ब्रॉड बहुत like the sort of statement that is all encompassive. Now when you look at a statement you quickly get the sense that the sentence is a very broad one. It's looking like a definition or it's looking like a concept level statement, then it's going to be general. Then specific statements are mostly things like examples. You also have specific definitions. Now, if I look at this sentence, the science of microbiology is beyond the understanding of most scientists. Now, I'm not talking about science in general, but I'm talking about a specific science, the science of microbiology. So, Hamesha move from general to specific when it comes to the options. Nouns are followed by pronouns. Pretty basic rule. So we all know that we use a proper noun or even a common noun to basically start a discussion. Okay. Now when I use a pronoun, usually a pronoun has a noun reference. So when I have multiple sentences in a parajumble, it's always a good idea to actually stack the sentences that feature the noun form, and even better if you have a proper noun form before the ones that feature the pronouns. Okay. Proper nouns followed by the plus common noun. Now, what do I mean by this? So let us say you have a sentence that features a proper noun, for example, Karan. Now, the second sentence has something like the student. Now, always remember, you cannot actually use definite article plus common noun unless you have a noun reference. That means कि जो Karan वाला sentence है ये पहले आएगा, ठीक है, और the student वाला जो sentence है वो बाद में आएगा. तो Karan is a smart kid. The student has secured 99 percentile on CAT exam, right? So you can see the student wala is going to be the follow up. A plus common noun followed by the plus common noun. ऐसा हो सकता है ना? You have two options and one is something like a student. A student called me yesterday, and then there is one more option that says the student asked for my help for the upcoming project. अब मुझे चॉइस करनी है कि which option has to be the first one and which option should be the follow-up one. Okay, so this is the first one and this is the follow-up. Then definitions and concepts followed by examples. Now this is pretty basic. So let's say you have a discussion about social media. Now one option is talking about the definition of social media. Now the moment you read a definition or a concept level statement, you get the sense that this is the introduction, because the introduction is going to explain the term. It's going to give you a broad perspective of what the entire like the discussion is going to be all about. And then you have these specific examples. So let's say अगर सोशल मीडिया के बारे में डिस्कशन है, एक ऑप्शन है जो सोशल मीडिया को डिफाइन कर रहा है और एक ऑप्शन है जिसमें फेसबुक और ट्विटर वगैरह की बात हो रही है. तो जो डिफाइन कर रहा है वो पहले आएगा और एग्जांपल्स वाले जो हैं वो बाद में आएंगे. एंड देन फाइनली look at these demonstrative cases. Now technically those can be demonstrative adjectives as well as demonstrative pronouns. हमेशा they require reference. So whenever you see a sentence that features any of these terms, always look out for a reference, which is usually going to be a noun or a pronoun that should come पहले. ठीक है ना? Like this के पहले अगर कोई ऑप्शन है जो उस चीज की बात कर रहा है जिसको दिस रेफर कर रहा है, तो उसको आपको पहले प्लेस करना है ना, like that. Okay. Now guys, these are some connecting words. Okay, you can say linking words. ठीक है, तो आप इनकी लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो क्योंकि ये लिंक बनाने में बहुत हेल्प करेंगे आपको. ठीक है, so whenever you solve questions you can use them to basically find those links, right? Okay, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. You can pause the video and try solving it on your own. Okay, so I hope guys you have tried it. So let me solve this question very simply. So देखो यार, second option और third option में proper noun आ रहा है. So you have the term hermione. Now you have third option also featuring the proper noun hermione, right? Fourth option के अंदर she है, ठीक है, and first option also features she. So that means pronoun. So two options have pronouns, two options have nouns. So obviously the noun वाला option is going to come पहले. So that means second और third में से कोई तो भी starting होगा. Second option obviously has to be the start because third option starts with because, which means it's going to give me the reason for something. Reason किस चीज का? Obviously
the situation that is there in second option. Now, second option is talking about why Hermione, as a person, is an ideal candidate for race bending. Race bending basically implies that you are going to change the race of like the cliched white character to the black one or the Asian one, right? So that is race bending, and third option is giving me the reason why these people are using race bending इन द सीरीज ओके, क्योंकि सीरीज किस चीज के बारे में होने वाली, इविल्स ऑफ रेशियल सुप्रीमेसी के बारे में होने वाली। तो ऑब्वियसली आप ये रेस बेंडिंग वाला फिनोमेना लेके उसमें शायद उस एस्पेक्ट को एम्फेसाइज करना चाह रहे हो। अब क्योंकि थर्ड ऑप्शन में बिकॉज आ रहा है तो सीधी सी बात है कि सेकंड के बाद में ही थर्ड आना चाहिए। फोर्थ एंड फर्स्ट का ऑप्शन का लिंक बड़ा इजी है, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन में गाइस देखो यहाँ पे ऑल्सो आ रहा है। अब ऑल्सो का मतलब क्या हुआ कि फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन में से फोर्थ ऑप्शन के बाद में ही ऑल्सो वाला ऑप्शन आएगा, बिकॉज also means additional information. So 4 and 1, that is how it's going to be linked. Okay, so very easily I can see the answer is 2 3 4 1. And I think you must have realized that just looking at the hints I solved this question, even if I have not really gone through each and every statement. Okay, yeah. So next question, let's give it a try now, guys. This is an actual cat question. Okay, so you can pause the video. Okay, so I hope you have tried. तो देखो यार, यहाँ पे ना अभी मेरे पास जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर फर्स्ट ऑप्शन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जनरल और स्पेसिफिक को डिसाइड करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन सेज द क्रिएटिव एलिमेंट इन प्रोडक्ट डिजाइन। तो यहाँ पे ना क्रिएटिव एलिमेंट इन प्रोडक्ट डिजाइन की बात हुई है, तो स्पेसिफिक है, मतलब प्रोडक्ट डिजाइन का क्रिएटिव एलिमेंट। अगर इससे ज्यादा जनरल ऑप्शन मुझे मिल जाता है तो वो स्टार्टिंग होगा, ये नहीं, ठीक है। ओके, सेकेंड ऑप्शन स्टार्ट हो नहीं सकता क्योंकि इनफैक्ट का मतलब होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, सो इट हैज टू बी द फॉलो अप स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन गाइस इज सेइंग द क्रिएटिव इंडस्ट्री। अब तुम देख रहे हो ना, द क्रिएटिव इंडस्ट्री का मतलब पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री को आपने टारगेट कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन के क्रिएटिव एलिमेंट की बात हुई है, तो विच इज मोर जनरल। ओके, ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन which talks about creative industry like the entire thing, it's more general, and fourth option has it is for this reason, तो ये starting हो नहीं सकता because this that these those starting में अपन ने पढ़ा था ना, उसको रेफरेंस चाहिए होता है, तो रेफरेंस भाई इसको चाहिए होगा, तो ये तो स्टार्टिंग होगा नहीं। चलिए, अब थर्ड ऑप्शन से मैंने स्टार्ट किया। इट सेज द क्रिएटिव इंडस्ट्री इज रिसीविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टुडे एज इट्स ग्रोथ रेट इज फास्टर देन दैट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ होल। तो आप ये बता रहे हो, और क्रिएटिव इंडस्ट्री मतलब पूरे क्रिएटिव इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो कि इसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है क्योंकि इसकी ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है, इवन इतनी फास्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से भी ज्यादा फास्ट है। अब इसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए ना आपने इनफैक्ट लगा के सेकंड ऑप्शन को फॉलो अप स्टेटमेंट बनाया। आपने कहा कि अगर मैं बाकी इंडस्ट्रीज के क्रिएटिव एलिमेंट को भी इसमें जोड़ दूं तो ये ग्रोथ रेट ना, ये जो इसका मतलब जो डायमेंशन है, ठीक है, और क्रिएटिव इंडस्ट्री का जो साइज है वो तो और बड़ा हो जाएगा। अब एक चीज सोचना, आपने ना थर्ड ऑप्शन में क्रिएटिव इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट की बात की और आपने एम्फेसाइज किया कि कितनी ज्यादा ग्रोथ रेट है। फिर आपने ना, क्योंकि देखो यार, इनफैक्ट का मतलब होता है कि जो पुराना वाला आइडिया है ना उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हो बट विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो यू हैव एम्फेसाइज्ड कि भाई अगर मैं बाकी इंडस्ट्रीज के क्रिएटिव एलिमेंट को भी जोड़ दूं तो पता नहीं डायमेंशन कहाँ ही पहुंच जाएगा, right? In fact, the creative element in the value of the world industry would be larger still if we added the contribution of creative elements in other industries also. So यार, other industries का तो सेंस ही तब बनेगा ना जब आपने मेन इंडस्ट्री क्रिएटिव इंडस्ट्री की बात कर ली, और क्रिएटिव इंडस्ट्री में अब आप ये कह रहे हो कि अदर इंडस्ट्रीज के क्रिएटिव एलिमेंट को भी जोड़ दूं तो साइज और बड़ा। ओके, गुड लिंक आई वुड से, इनफैक्ट की वजह से काफी इजी हो गया 3 और 2 को लिंक करना। तो 3 और 2 का लिंक हो गया, राइट? अच्छा, अब ना फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में या तो 1 4 होगा या तो 4 1 होगा। नाउ लेट अस सी फोर्थ ऑप्शन, इट सेज इट इज फॉर दिस रीजन। कुछ तो रीजन आया इसके पहले, है ना? अब मैं थोड़ा सा आपको कंटेक्ट देता हूँ। देखो यार, अगर मैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की बात करूं तो आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड अग्री कि एक प्रोडक्ट का जो डिजाइन होता है वो कई बार उसको अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा बेटर बना सकता है। क्यों? क्योंकि लोग शायद उसको इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि उसका डिजाइन बहुत अच्छा है, ठीक है। नाउ obviously there are like legendary products that have had a very unique design like iPhone and all that, iPad, ठीक है। अब वो डिजाइन एलिमेंट जो है ऑब्वियसली वो नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट है क्योंकि उसको आप टच नहीं कर सकते, और एक ऐसी चीज़ है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काउंट होगी, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपका जो राइवल है वो उस क्रिएटिव मतलब एलिमेंट को या प्रोडक्ट डिजाइन को ना कॉपी मार दे।
ठीक है, तो अब देखना यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, द क्रिएटिव एलिमेंट इन प्रोडक्ट डिजाइन हैज बिकम ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज इट्स वन ऑफ द फ्यू वेज अ फर्म और इंडस्ट्री कैन सस्टेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स राइवल। तो प्रोडक्ट डिजाइन आपको अपने राइवल्स के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। यही रीजन है कि आजकल ट्रेड इश्यूज जो है उसमें ज्यादातर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो है ना, जो लड़ाई झगड़े हैं वो इसी चीज को लेके होते हैं। इट इज फॉर दिस रीजन दैट टुडेस ट्रेड इश्यूज आर इंक्रीजिंगली इन्वॉल्विंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि भाई जो आप डिजाइन की बात कर रहे हो ना, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको आप फिजिकल बोल सकते हो, इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो चीज आपकी डिजाइन है। ठीक है, तो उसको कोई कॉपी नहीं मार सकता। As Western countries have an interest in protecting their revenues along with freeing trade in non-tangibles. Okay, so obviously now you can see कि यार ये जो दिस रीजन है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो एंगल है, जो रेफरेंस चाहिए था वो यहीं से आने वाला है। ठीक है, सो दैट मीन्स 1 के बाद में 4 आएगा। ठीक है, so this is my answer. Okay, and this is an actual cat question. Okay, so you can see within 10 minutes we were able to like solve this question, as in like understand the rules and solve this question. एंड बिफोर वी वाइंड अप दी सेशन गाइज, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है घर पे। ठीक है, एंड यू कैन टेल मी द आंसर इन द लाइक in the comment box, and I am going to reveal the answer in the next session. Okay, and finally before we leave guys, Pinnacle batch, I believe almost all of you now know about this batch. तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अगर आप एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे हो कैट 2025 की, तो डू कंसिडर दिस बैच। यू कैन ऑलवेज गो एंड ज्वाइन माई फ्री बैच दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, जो आपका MBA पाठशाला का जो ऐप है, उसमें जाके आप फर्स्ट सेशन आप अटेंड कर सकते हो एंड यू कैन एक्सपीरियंस हाउ वी टीच एंड ऑल दैट। ओके, so like it includes everything, and if you're really looking at CAT 2025, this is one of the batches to consider. That's it guys, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।